एल्लरिಗೂ नमस्कार। मेरा प्रणाम सब लोगों को। I'm going to communicate in 3 languages. मेरा मातृभाषा कन्नड़, हिंदी और इंग्लिश। On the event of post silver jubilee of Jatiya Sahitya Prakasham Trust, a year-long Mira International Literary and Cultural Festival, the third episode, is dedicated to very respectable Bankim Chandra Chakraborty ji Vande Mataram. For that, in this occasion, I recall Ramakrishna Paramahamsa ji, Mati Sharada ji, Swami Vivekananda ji. In Kannada, we are saying, "Yedu, Yeddedu, Guri Muttuva Tanaka Nilladeva." Same thing, arise, awake, and start now till the goal is reached. For me, Ramakrishna Paramahamsa, through the two, one Mahakavi, Rashtrakavi, Kuvenpu, he teaches what is Ramakrishna Paramahamsa, what is Mate. He is a very spiritual, and we respect his Divya poet, Divya Murti hai. However, ये पहले is former, honorable former Chief Justice of India, Supreme Court, such a great scholar. His name is M.N. Venkatacharya. He told us, I have close associated with him, he told about Ramakrishna Paramahamsa, Vivekananda ji, Mataji. So, in this, when you give one little honor, मेरा जीवन धन्य है, धन्य है, धन्य है. अभी मेरा mother said, don't say it is a bland, say put a grain of salt. Sarpendra, unkal upakam. It means you have to be positive, all the things, positive attitude, positive. Here I got 2 things. See, Shakti Moidas, Shakti, the word itself, some energy. When he participated in Maha Jatan Sadan, मेरा एक राष्ट्रीय प्रशस्ति पुरस्कार ऑडियंस में आया था. I have seen his enthusiasm, spirit, as age compared to the title, I am an old man, he is younger. Such an energetic person. His spirit is very needed, and his thoughts, ethics and principles, ये बहुत अच्छे हैं. हम सब लोगों को उसका क्या है ना, वो क्या काम करते ना, वो देश के लिए, ये राज्य है, हम सब लोग हाथ जोड़ते हैं, खुश करते हैं, भारत प्रकाश होने. Such an enthusiasm, and I am very happy. Our Swami Subrahmanya Swami ji, he guided to him. That's a beauty. I have seen my tears, happy tears. Such a beautiful culture. Swami ji मेरा प्रणाम करता. और एक मेरा भी एक थीम था, वंदे मातरम. You people say Vande Mataram. We say Vande Mataram. But sometimes you are the ocean. आप सागर होते हैं, में नदी आते हैं, कर्नाटक नदी आते हैं. कर्नाटक सागर होते हैं, बंगाला नदी आते हैं. ऐसे रिलेशनशिप है, हम दोनों के एक ही है. भाषा एक है. बैंगलोर में एक साल 100 Bengali organizations are there. I'm mixing the food, the culture, literature, music, variety, even IT company, BT company, business and everything. But we are all one nation, one family. And my theme is Kudona, Kattona, Bayona, Bedagona. संग मिलेंगे, संग रचेंगे, संग जिएंगे, संग खिलेंगे. Let's come together, let's stay together, let's live together, let's shine together. Welcome to this. Only one thing. Nowadays, Bankim Chandra ji, the Divya Murti, Acharya Gurudev Bhava, Rabindranath Tagore ji, the man of spirit, our real hero, Subhash Chandra Bose. Such a beautiful son. They sacrificed, they struggled for our freedom. But today, I'm sorry to say this, we don't know the value of what is freedom.
What it is we don't know. We never carry the meaning of freedom. स्वच्छंद अलग है, स्वेच्छा अलग है. अभी मैं स्वेच्छा ऐसे नहीं, कितना त्याग से बलिदान से मेरे को स्वातंत्र मिल गया. इसलिए वंदे मातरम ये सिर्फ गीत नहीं है, हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी है. क्यों राष्ट्रगीत हमारी जिंदगी है, वो सिर्फ एक गीत नहीं है. इसलिए सबको पूर्व इतिहास है ना, पश्चिम में हम ज़्यादा इतिहास है. Spiritually, it's connected. Arvindo Sri Ji, Ramakrishna Paramahamsa Ji, even in South, we have Ramana Maharshi Ji, like that, we are connected. We have such a beautiful philosophical, spiritual, आध्यात्मिक अनुभूति है, सच्ची है. वो परंपरा हमारे children को, we have to carry to this to our children are our future. We have to carry. But one thing I have to say. ನೀರೊಳಗಿನ ನೀರಿನ ಕಣ್ಣೀರ ಕಂಡವರೆಲ್ಲ who have seen the tears of undercreature water. पानी में एक मछली रो रहे थे, कौन देती है? पानी में एक मछली रो रहे थे, कौन देती है? ये एक छोटा कविता है. इसलिए the flying birds never built their nest at the sky. ಹಾರಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್. ಈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪೃಥ್ವಿ, ಭೂಮಿ, ಭೂತಾಯಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮದರ್ ಅರ್ತ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ದ ಕಲ್ಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿತ್ ಯು. ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒನ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ See, I studied, I got law degree, journalism degree, and I got my national सब भी छोड़ दो. मैं एक ही अवार्ड है, मैं किसान का बेटा है, मैं किसान सिर्फ किसान का बेटे एग्रीकल्चर करेंगे. इधर में बंकिम चटर्जी का पिता ADC है, वो मिडनापुर में. अभी ये कर्नाटक वाला, ईस्ट फ्रॉम कर्नाटका, ईस्ट फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड. It's a very difficulty. He studied there. He don't have food or anything. Such a very backward. He don't have two eyes also. He don't have eyes also. He struggled, and one minute only he passed the AS. Just first time he passed the AS. Now he is ADC at West Bengal. Midnapur, ADC, he given one message, we have to see, he sent one message for this. We are connecting each other. We have lot of traditional. We have to recall and respect and पूजा करता परमात्मा जी को, आते शारदा देवी को, विवेकानंद जी को, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस. But we have to carry their messages, their life to our younger generation, especially our kids. It's my humble request, and I pray. See, by what I say today, I've seen I'm not belongs to any party. I'm not leftist. I'm not rightist. I'm rightist. मैं एड़पंथी नहीं है, बलपंथी नहीं है, मैं जीवनपंथी है, जीवनपंथी है. You know, हमारे देश में politician in the days they are flying of white doves. कबूतर को ऐसा डेट में रात में इसमें स्टोर में मारता था. ये ट्रेजिकल थिंग है. मेरा दुख है ना हमारा पॉलिटिशियंस को
वो पॉलिटिक्स मालूम है. The meaning of politics is different. Politics is service. Now they made politics is a business. This is true, and even education is service. It is we converted into business. Health is service. We converted into business. हमारा पूरा पंचभूत अभी सेल होता था. पृथ्वी सेल हो गया, वायु सेल हो गया, अग्नि सेल हो गया, क्या ना आकाश की सेल हो गया. ये सेल नहीं, पंचभूत हैं. इसलिए मेरे लिए आनंद है ना, मैं बहुत खुश है. जय भारत जननी तनु जाते, जय है कर्नाटक माते. We are all one family, one nation. Especially all the dignitaries. Here is poet is there, Mata is there, Pitambars are there, and I am very much grateful and thankful. क्यों ना मेरा जीवन धन्य हो सकता है. ये सब हम रामकृष्ण मिशन. I love and especially Vivekananda, and that too particularly I am repeating. If you have to carry his enthusiasm, his ethics and preaching on behalf of everybody, really, Shaktimanji, your name, I am accepting, really accepting. We have to push it, we have to give support it. Even I have a lot of friends in Calcutta. Apurva Gupta, very famous poet and artist and musician and singer. We did a lecture in Bangalore. She did Kannada song also, English song also. It means we are all one. There is no difference between Bangala and Kannada or Odia. We are interconnected. We are all, sometimes you are ocean, we are river. Or sometimes we are ocean, you are river. The meaning is like that. So we have to give respect to it. Please make train number request. हमारी जिंदगी है, सबकी बड़ा योगदान है. सबको राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मंत्री, साधु, सन्यासी, जगतगुरु, IAS, सबको महागुरु है. हमारे किसान है, हमारे काम के लिए, खाने के लिए, कपड़े के लिए, काम के लिए काम करता है. उसकी जिंदगी बर्बाद हो गया. दूर तक सभी को काम पे पूछता. उसका जिंदगी अच्छी होते है, भारत विकास होते हैं. किसान की जिंदगी कलाश होते है, भारत विकास होते है. सच्चे है ना. हम सब लोग अन्नदाता सुखी भगवान ऐसे चाहिए. इसलिए तो मैं सबको पूछता हूँ, सरकार को पूछता हूँ, उसको पसंद कर. मिनिमम फिक्स्ड रेट, ओनली मिनिमम, नॉट एसिंग फॉर मैक्सिमम. मिनिमम फिक्स्ड रेट. एवरी डे they taking आत्महत्या करता, सुसाइड करता. It is very tragical things. Real strength of our nation is farmers, किसान. जय जवान है, जय किसान है. उसका जिंदगी अच्छी होते है, सभी अच्छे होते हैं. सब लोग we love everybody. पूरा जीवन अच्छे होते हैं, खुश होते हैं. सब लोग जिंदगी सार्थक होते हैं. इसलिए तो मेरे को ये अवकाश प्रणाम देते तो मेरे सभी घर वाले को, स्पेशली शक्ति मोहन दास जी, स्वामी जी को, I love, I respect, भक्तिपूर्वक प्रणाम है. नमस्कार, धन्य धन्य धन्य. And particularly this man is told that Kempu Vanna, he has got 2 IAS degrees. Even I have 1 IAS degree. The major bada IAS na Indian Agriculture Service. Chota IAS na Indian Administrative Service. Of course, he has got 2, and I have bada IAS, Indian Agriculture Service. That one is mine. I'm always to be proud to be farmer. Yes. Thank you. Thank you.